Namaskar. Myself, Dr. Kumar Mishra, Department of Sociology and Social Work, Bharati Vishwavidyalaya, Durg, Chhattisgarh. Welcome you all on today's lecture of research methodology. Today we will discuss on this topic of main process of interview. So, in our previous few lectures, we have discussed about the whole phenomenon of the interview method, which we are using broadly in our social researches, many kinds of social researches. So, in today's lecture, we will try to ponder upon how the interview process is performing by the scholar while he is interviewing his research area's respondents, how he should behave in his research process and what kind of process step he may use in his interview while he is interviewing the respondent. So with the help of this process, one can clarify that how one can proceed his interview in a good manner, so that he can collect the deep information about his objectives of research, and without any kind of conflict and disturbance, he can proceed his whole interview and having a good step for heading his research work. So, in this manner, we have to discuss about these few points, and in our next class, this is the part 1 of it. In our next class, we will discuss about few more points of it, that how the process of interview in social research is performed by the scholars. Okay, so today's subtitles we will discuss are, it is a stepwise process. The first process step is contacting the respondents. Second one is revealing the purpose. Second step is revealing the purpose. Third is appeal for cooperation. The next is beginning the interview. The next step is probing and avoidable questions. So, in today's lecture, we will discuss about these subtitles, these steps. It is a stepwise process of interviewing the respondents. So, first we will discuss it in English, then in Hindi. Okay. So, the first step is contacting the respondents. So, when a researcher or an interviewer want to interview his respondents, which are related to his research topics area, he first contact the respondents. His behavior is must be so polite and so generous, and his way of behaving, his body language and his clothes are also to be gentle and polite, and he has to maintain the ethics for interviewing a person. So with a generous and polite way, he can interview the respondents. So, in this manner, we can discuss that contacting the respondent in genuine way. So, the second step, after contacting the respondent in
a generous way, in genuine way, a polite way, with simple clothing and with the polite behavior, he has to respond to the respondents. And in second step, he has to reveal the purpose of his interview. So he has, in second process, in second step, he has to reveal his purpose of interview. Then what kinds of motives are behind his interviewing the person. So in a polite way, he can reveal his purposes of interview to the respondents and try to convey them that these are the purposes of my research, and this research is having a social importance, and with this kind of research maybe the government and the policymakers can have the hints to make a better policy for this kind of problems or this kind of issues, which is the main motto of our research work. So in this kind of conversation, he may convey his purposes of interviewing the respondents. The next one is appeal for cooperation. Appeal for cooperation. So when he has done that, he has revealed his purposes of interview, then he has to request the respondent to cooperate while the interview. He has to politely and generously say to the respondent that while he is interviewing him, he has to cooperate or she has to cooperate him or her for the purpose of a good level interview. So he can collect deep level data. So the purposes of research work may fulfill by this kind of conversation between them, the interviewer and the respondent. The next one is beginning the interview. After such conversation which we have discussed about, he can begin the interview now and asking the questions which he has prepared in his interview schedule, or he has keeping in his mind whichsoever is the technique he is using, whichsoever the types of interview which we have already discussed in our previous lectures he is using. He has to interview the person, and with the conversation he is starting to know the information and knowledge about the topic, about the person, about the community, and about the motives of his or her social research. Okay. Then the next step is probing and avoidable questions. So the researcher have to decide that which kinds of questions may be in the sense of probing, and which kind of questions may be in the sense of avoidance. So he has to avoid some questions which are intrinsically and personally related to the personal life of the respondents. Okay, so he may not get angry, and he may not feel uneasy and hesitating in answering, and lose his temper or lose his interest for this interview session. So an interviewer must avoid these kinds of questions and these kinds of conversation, in which kind of conversation he may get very personal to the respondents. All the interviewers may have to avoid these kinds of conditions in which
they may get more personal in their conversation with the respondents, the more personal questions. We have to avoid these kinds of questions. So these kinds of questions may irritate and may create anger and avoidance in the respondent's mind. And he has also to decide that which kind of questions the interviewer may probe and may intentionally having the shine that the respondents should may answer these kinds of questions and focusing these kinds of questions. Obviously these kinds of questions are related to the objectives of the research work. So increasing the probing parameter to that type of questions and avoiding such questions which may create anger or which may create the inappropriate situation in the mind of the respondent. So the researcher, the observer, the interviewer should decide which to probe and which to avoid. In the question sheet, in the questions which he has prepared in his mind or prepared in his sheet, whichever is the case, he has to decide and he has to manage these kinds of questions asking before that respondent. And in many situations some respondents are cooperating very well and some respondents are hesitating or have very least interest in the interview session. So the interviewer must manage this kinds of situation with his conversation skill and his generous behavior. So the interview session must fulfill its objectives of interviewing the respondents, which is related to his research work topic. Okay. Now we will discuss it in Hindi. हम आज समझने का प्रयास कर रहे हैं मुख्य प्रक्रिया क्या होती है साक्षात्कार की मुख्य प्रक्रिया। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंतर्गत हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। आज हम इसका पार्ट 1 देख रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम इसे फिनिश करेंगे। आज कुछ प्रमुख बिंदुओं पर इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा कि आप भी जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो किन चरणों में आपको साक्षात्कार की प्रक्रिया को अपने संभावित उत्तरदाताओं के साथ अंजाम देना होगा। चलिए, सबसे पहले कॉन्टैक्टिंग द रिस्पोंडेंट्स। सो फर्स्टली वी हैव टू कॉन्टैक्ट द रिस्पोंडेंट्स। सर्वप्रथम आप जाएंगे और आपके जो संभावित उत्तरदाता हैं या सैंपलिंग की निदर्शन की प्रक्रिया के द्वारा आपने जिन उत्तरदाताओं का चयन किया है अपने उत्तरदाताओं के पास करेंगे। जिस भी सैंपलिंग की या निदर्शन की प्रक्रिया का आपने यूज़ किया है अपने अध्ययन में, तो आप जाएंगे, उससे संपर्क करेंगे। आप संपर्क करते समय बहुत ही विनम्रता से उनसे पेश आए, बहुत ही सज्जनता से उनसे पेश आए। आपकी वेशभूषा भी सादगी से भरी हो और आपकी जो तौर तरीके हैं, बॉडी लैंग्वेज है, ये सब महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं कि कैसे आप उस व्यक्ति से संपर्क स्थापित कर रहे हैं। और आपका व्यवहार ही और आपके बातचीत का तरीका ही ये निर्भर करेगा इस बात पे कि वो कितना आपके साथ में कंफर्टेबल है आपको उत्तर देने के लिए और इस इंटरव्यू के जो सेशन है, इस इंटरव्यू सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए इस बात का ध्यान में रखना पड़ता है। अगला स्टेप जो होगा, इसके बाद हमें जो है अध्ययन के उद्देश्यों को जाहिर करना होगा उस व्यक्ति से जिसका कि हम साक्षात्कार करना चाह रहे हैं। तो जब हम अध्ययन के उद्देश्यों को उस व्यक्ति को जाहिर कर देंगे और हमें बताएंगे
वाला समाजशास्त्र और समाज कार्य के क्षेत्र में, समाज के उत्थान के क्षेत्र में हम सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में जो जिस टॉपिक को लेकर के हम रिसर्च कर रहे हैं, जिसके लिए हम डाटा कलेक्शन करने के लिए, तथ्यों का संकलन करने के लिए साक्षात्कार कर रहे हैं, हम इसकी महत्ता और उपयोगिता को यदि स्पष्ट करें तो हो सकता है वो व्यक्ति भी रुचि ले जिसका हम अध्ययन करना चाह रहे हैं, जिससे हम सूचनाओं का एकत्रण करना चाह रहे हैं। इसके पश्चात जो है अपील फॉर कोऑपरेशन, सहयोग के लिए याचना, हम उसे सहयोग के लिए निवेदन कर सकते हैं, याचना कर सकते हैं कि ये हमारे उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों को लेकर के, महत्वपूर्ण उद्देश्यों को लेकर के हम शोध कार्य कर रहे हैं और ये हमारे शोध कार्य से समाज को इस प्रकार से लाभ हो सकता है। तो आप यदि हमें सहयोग करेंगे तो एक महत्वपूर्ण शोध कार्य होगा जिसके माध्यम से समाज को इस पर्टिकुलर समस्या के ऊपर में कुछ दिशा निर्देश, कुछ जानकारियाँ, कुछ तथ्य मिल सकते हैं जिसके आधार पर इस समस्या को दूर किया जा सकता है या इस मुद्दे के संबंध में कुछ अच्छी योजना लाई जा सकती है। इस प्रकार से आप उन्हें कन्विंस करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे और आपका विनम्र निवेदन, आपका सुमधुर व्यवहार जो है ज़रूर संभावना पैदा करता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है, उत्तरदाता है, आपका सहयोग करे साक्षात्कार की इस प्रक्रिया में। अगला है बिगिनिंग द इंटरव्यू। इन चरणों को पूर्ण करने के बाद आप जो है अपने प्रश्नों को पूछना शुरू कर सकते हैं। हो सकता है आप एक टूल के रूप में, उपकरण के रूप में साक्षात्कार निर्देशिका के आधार पर निर्मित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके आधार पर आप क्वेश्चन पूछिए और भरते जाइए आंसर, या आप गैर निर्देशित साक्षात्कार विधि, इस प्रकार की विधि का उपयोग कर रहे हैं तो आप जो है अनौपचारिक रूप से बातचीत शुरू करिए और जिस मुद्दे को लेकर के आप उनसे इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं, साक्षात्कार लेना चाह रहे हैं, उस मुद्दे के संदर्भ में एक बेहतर संप्रेषण क्रिएट करिए और जानने का प्रयास करिए कि उस व्यक्ति के मत क्या हैं, उस अध्ययन के उद्देश्यों के संदर्भ में जिनको लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं और अध्ययन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। उसके पश्चात जो है अंतिम जो स्टेप है इसमें प्रॉबिंग एंड अवॉइडेबल क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जिन पे जोर दिया जाना है, जिनको प्रोत्साहन दिया जाना है, और ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे प्रश्न जिनसे बचने की कोशिश करनी है। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे क्वेश्चंस से बचने की कोशिश करनी है जो बहुत ज़्यादा निजी हो, उत्तरदाता को लेकर के, उसके निजी जीवन को लेकर के, या ऐसे क्वेश्चंस जो उसमें क्रोध उत्पन्न कर सकते हैं, निरस्ता उत्पन्न कर सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन से बचने का प्रयास करना चाहिए ताकि उत्तरदाता सहज रूप से, सुलभ रूप से अपने मत जाहिर कर सके और आप गहराई से, सूक्ष्मता से उन तथ्यों को प्राप्त कर सके जिन तथ्यों की प्राप्ति आपके अध्ययन के उद्देश्यों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को जो है इंकरेज करना है, जिन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको अपने अध्ययन के उद्देश्यों के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्राप्त हो सके, और ऐसे क्वेश्चंस से और इस प्रकार की चर्चा से अपने आप को बचाने का प्रयास करना है जिससे हमारा उत्तरदाता असहज हो जाए, क्रुद्ध हो जाए या किसी प्रकार की असुविधा में अपने आप को पाए। तो इस प्रकार से इन स्टेप्स का, इन चरणों का पालन करते हुए हम इंटरव्यू की प्रक्रिया को, साक्षात्कार की प्रक्रिया को सामाजिक अनुसंधानों में अंजाम दे सकते हैं। इसके कुछ और भाग हैं, अगले स्टेप्स, अगले चरण कुछ और हैं जिनके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में हम यहीं पर हमारी चर्चा को विराम देते हैं। आप सबका धन्यवाद।